Can you all hear me and see me? A very, very warm good evening, my lovely mascots. Last 7:30 p.m. रुलाना मत बच्चों. Vani Mam is going to get very emotional today. मेरे बच्चे, they are going to be young doctors of India. This is so amazing. चलिए, quickly 200 क्वेश्चन कराती हूँ. आज 1 घंटे में खत्म करने. कल सुबह 6 o'clock, क्योंकि कल सेकेंड सेशन इज गोइंग टू बी एट 3 o'clock. बायोटॉनिक की तरफ से आप 5 साढ़े 5 बजे फ्री अपने बैग्स पैक कीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसके बाद चेक कीजिए. 9 बजे सो जाइए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करना पड़ेगा. तो हो सकता है आपको अगले दिन सुबह 4 या 5 बजे जगना पड़े. यू माइट हैव टू रीच द सेंटर्स बाय 11:30. यू माइट हैव टू ट्रैवल 100-150 किलोमीटर्स. हो सकता है आप में से काफी लोग कल शाम को ट्रैवल कर रहे हो, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू ट्रैवलिंग yesterday in the evening? I mean tomorrow in the evening. You might have to travel, stay with a relative. So हमारी तरफ से बायोटॉनिक की वजह से कल शाम को आप 5 बजे, 4:30-5 बजे मैं आपको फ्री कर दूंगी. उसके बाद शाम को हम बस 5 मिनट के लिए we'll just all of us come together and pray. Done? I know stress levels are very high. बिल्कुल मत घबराइए. I will continue to pray for you when you're in the examination hall. Your exam will be very well. वापस आके I'm 100% sure आप बोलोगे मैम एग्जाम बहुत अच्छा हुआ. डन. जो भी प्रॉब्लम है एग्जाम के बाद कल आपने पर्सनली परसों मुझसे बात करनी है. रिमेंबर वी आर देयर हियर. आई एम देयर ऑन वेदांतु अवेलेबल. आई एम आल्सो देयर ऑन द चैनल अवेलेबल. बाय चांस यू नीड टू टॉक मी, यू कैन आल्सो डू इट ऑन इंस्टाग्राम. एंड कल सुबह आई एम गोइंग टू डू फाइनल 200 क्वेश्चंस एट 6 AM in the morning. डन. लाइव है कल सुबह, लाइव 6 AM करूंगी, ताकि अगले दिन में सुबह जल्दी उठने की आदत डालो. और कल हर हालत में 9 बजे सो जाना. प्लीज एब्सोल्यूट डिजिटल डिटॉक्स. कल कोई बच्चा रात को 7-8 बजे के बाद कोई लेक्चर नहीं देखेगा, कुछ ऑनलाइन नहीं बैठना. लगभग आज लास्ट दिन. कल हल्का सा फुल सिलेबस में एक बार 100-200 क्वेश्चंस करा दूंगी. गिव इट एज अ मॉक टेस्ट. That's all. Done. Droppers की बात भी आज नहीं करेंगे, सारी बातें कल करेंगे. चलो फटाफट आ जाओ. Let me start your class right here, right now. So this is Menti number 1, full screen. There you go. 65653264. आज आप जितने बोलोगे 100 questions, 110 questions, 130 questions, उतने करेंगे. आपका सिलेबस हुआ है, आप बहुत अच्छा करोगे. Done. Tomorrow I'll try and get a cheat sheet for you. मैंने PDFs बना लिए, मैं आप लोगों को दे दूंगी. आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. Just don't worry now. You will do very well. Am I clear? You will do. बहुत अच्छा करोगे आप लोग. Ready? हरिथी, नो बेटा ऐसा कुछ नहीं है. पेपर कल मिलेगा, परसों मिलेगा आपको. पेपर कैसे ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? ठीक है, चले आप लोग अच्छा करोगे. इवन इफ यू स्टॉप स्टडिंग टुडे, कुछ रिवाइज नहीं करना. कल कोई ऐसे फैनेटिक बिहेवियर नहीं करना, फ्रैंटिक काम नहीं करना. ये भी पढ़ लो. कल सिर्फ रिलैक्स कीजिए. डन. ऐसे कल का दिन पता भी नहीं चलेगा. सुबह होगी, शाम हो जाएगी. आराम से आप पेपर देकर आइएगा. ठीक है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 1. चलो. If vasa efferentia gets blocked, the gametes कल भी कराया था. From epididymis to vasa deferens, from testis to epididymis. Answer is A. कल रटवा दिया था मैंने आपको. Testis से लेकर epididymis vasa efferens, epididymis से आगे vasa deferens. चलो, let's do this बेटा. आप लोग बहुत अच्छा करोगे कल. It's a अरे लल्लू सवाल. Come on. 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करके दिखा दो. मैस्कॉट्स. मैलोनेट, B ऑप्शन, C ऑप्शन मैलोनेट. Well then, question number 3. आहा, सिनकार्पुलरी भी कराया है, एपोकार्पस भी कराया है. Now it's मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरीज. दैट मींस इनडायरेक्ट पूछ रहे हैं सुपीरियर ओवरी किसमें होती है. चलो इनडायरेक्टली ट्राइंग टू आस्क यू सुपीरियर ओवरीज किसमें होती है. प्रियांशु जी, ये पेपर शेपर ऐसे किसी के पास नहीं आता बेटा. पेपर कल आएगा बेटा. ऐसे नहीं होता पेपर. नीट का पेपर है, कोई मस्ती पेपर थोड़ी ना है बेटा. क्या बात कर रहे हो बेटा? ठीक है. मोर देन 1 ऑप्शन. मैंगो, राइट.
done T, well done. Question number 4. चलो, ऐसे नहीं बेटा, पेपर कल मिलेगा आपको। Very nice. चलिए, lichens are indicators of pollution as they do not grow in polluted areas. They're very very sensitive to sulfur dioxide. और कल बिल्कुल relaxed रहना, बिल्कुल relaxed। कल जितना थोड़ा बहुत पढ़ना होगा पढ़ लेना, सुबह 6 बजे आ जाना, हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल relaxed रहिएगा कल। Which of the following statements is are incorrect regarding roots? Rhizophora, pneumatophores are found. Tap roots of carrot and turnip are adventitious roots of sweet potato, get swollen and store food. The stems of maize and sugarcane have supporting prop roots coming out of the lower nodes of stem. Chalo. Incorrect. You have to tell me the incorrect option. Incorrect option. Chalo. Incorrect option. Well done. Well done beta. It is only the stems of maize and sugarcane have prop roots is wrong. They have stilt roots. They have stilt roots. Well done. Question number 6. ठीक है। एंड बेटा प्लीज किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन पे पेपर के बारे में जो लोग लिख रहे हैं, अपना डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज। ये सब वो बच्चे हैं जो खुद सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो दूसरों का टाइम वेस्ट करने के लिए लास्ट मोमेंट पे ऐसी बातें लिखते हैं, इन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए आप। वेल डन। क्लोरोफिल इज लीस्ट इफेक्टिव इन एब्जॉर्बिंग ग्रीन लाइट। ग्रीन तो वो रिफ्लेक्ट करता है। आपने इतनी मेहनत की, मैं आपको गारंटी देती हूँ बेटा, अगर आज आप नहीं पढ़ोगे ना, आज और कल आप वेकेशन मनाओ, आपका परसों पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ वन डे बैटल। कई बच्चों ने 3 years लगाए हैं, कई बच्चों ने 2 years लगाए। राइट यू ऑन द चैट सेक्शन। टुडे यू डोंट स्टडी, जैसे ही क्लास खत्म होगी 9 बजे सो जाओ, कल भी 9 बजे सो जाना। मैं गारंटी लेती हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड फॉर 3 years, यू वर्कड हार्ड फॉर 2 years, यू वर्कड हार्ड फॉर लास्ट 8, 10, 11 months। आपको सब याद आएगा, ये वानी मैम की प्रॉमिस है। I'm your teacher, and you know gurus have powers. So I'm telling you for sure, I'm telling you आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा. Your hard work will be rewarded in the examination. Right? I am telling you, your hard work will be highly rewarded. Have faith. When your guru is telling you, have faith. Bioresources by multinational company without compensation, without payment, it is called as Biopiracy. Biopiracy, it is not there. It is not there. It's called as biopiracy. What you do against this is you make a patent for yourself. You make a patent for yourself. Question number 8. Which among the following is true? Plasma membrane helps in nucleic acid synthesis. Plasma membrane helps in osmoregulation. In protein synthesis, transportation of only water in and out of the cell. It is true. Come on. Your teacher is with you. You don't worry. All the students who are coming and talking nonsense, just don't worry about them. You solve your paper. You have to tell me the ones which is true. Plasma membrane helps in osmoregulation. Right? Well done. Next one. Question number 9. Look at your speed. You're doing very well in today's class. Which of the following can accelerate the rate of decomposition of detritus? कल परसों भी ये किया था, लिग्निन वाला, याद आ रहा है? Accelerate पूछा है बड़ा आज। Accelerate if moisture and aeration are optimum. लिग्निन में तो कम होगा, एक्सेलरेट पूछा है, कल भी सोच समझ के जवाब दीजिएगा। 10 सेकेंड एक क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली प्लीज। बिल्कुल घबराओ मत बेटा जानवी, अगर आप क्लास में हो बिल्कुल मत घबराइए।
Which of the following disease can be detected by Vidal test? Typhoid, right? And guys, if you read in India, if you read our culture, you know how I always am telling you this, talk to your parents. Ask your parents to tell you it will be fine. Parents and teachers, in our country, parents and teachers have a lot of superior powers. I feel that. I've been blessed by some of my teachers, and that's the reason why I am doing what I'm doing today. Talk to your parents. You have grandparents at home? Your grandparents have magical powers. If you feel stressed, you feel anxious, go sit with your grandparents for some time. Ask them to just put their hand on your head. Right? You have your grandparents, you have your elders, you have your mother. Mother's love can protect you. Trust me, mother's love is very, very powerful. So if you're feeling stressed, you're feeling anxious today, go sit with your parents for some time. That also not fathers as much. Sit with your mothers. Right? Sit with your grandmom, sit with your mothers. Don't worry, if you have an elder sister, sit with your elder sister. You will be fine. Tell them to help you overcome that. You don't know how powerful a mother's love can be. Right? Mothers can be very, very powerful. Right, everybody? Don't worry. Don't be stressed. You will do well. Chali, in which of the following, let's be quick now. In which of the following phase of the cell cycle, the amount of DNA remains constant at 4C level, considering that the initial amount of DNA was 2C. This is an easy question. G1 is G2M. So it's going to be only G2 because M is going to divide again. It's going to be only G2 because M is going to divide again. Let's be quick. Tomorrow morning, let's meet at 6 o'clock. Done. 6 a.m. in the morning, we'll quickly do it for 2 hours. Which of the following characters are seen in an individual with trisomy of chromosome number 21? Trisomy 21. Trisomy 21. Loss of skin pigmentation. Trisomy 21 is Down syndrome. Psychomotor mental development is retarded. Mental retardation. Gynecomastia nahi hoga. Loss of skin pigmentation nahi hoga. A and B. Well done. B option. B option. Next question. 13th. B option. Choose the option that is only correct statement. Inclusion bodies which are found in prokaryotic cells are not bound by any membrane system. Ribosomes are the site of protein synthesis. Pili are the surface structures of the bacteria which may play a role in motility. Cell membrane of prokaryote is structurally similar to the eukaryotes. Chaliye. हाँ लेफ्ट हैंड की तरफ आगे का मैसेज निकाल दो. हाँ हाँ इसी की गाड़ी इसके पहले गेट की गार्ड को दे दो. होगा गेट पे गार्ड पहले गेट पे. हाँ 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 इसी के गेट की बात कर लीजिए. फीमेल गैमेटोफाइट्स हैविंग 8 न्यूक्लियाई. जल्दी मिल गया आपको. मिल गया. हाँ आप मेजर से बात कीजिए. मोनोस्पोरिक कल भी क्वेश्चन किया है. मोनोस्पोरिक. चलिए प्लीज डू समथिंग. क्या करना है बेटा?
I know, Neha, that's why I told you in the morning, take your polythene and go. Don't leave your, your admit card outside like that. It could rain any time. Take your polythenes. In which of the following categories is the genetic disorder PKU? Multiple allelism, polygenic inheritance, multiple factor, or pleiotropy? चलिए, in which of the following categories does the genetic disorder pleiotropy, phenylketonuria, one gene, multiple effects, the color of the eye, the pigmentation of your skin? Right? Well done, well done, well done, well done. बिल्कुल मार्क कर सकते हैं बेटा. 17th leaderboard आएगा बच्चे. Epithelial tissues are characterized by what? Epithelial tissues, tight junctions and gap junctions, tight junction, adherent junction, gap junction only, tight junction. Epithelial, stratified squamous keratinized epithelium. क्या होगा? What is the answer going to be? Come on, everyone. Epithelial tissue, tight junctions, adherent junctions, gap junctions. Well done. Well done. It could be any of the following. Next. Question number 18. The most abundant protein of the biosphere is found in chloroplasts, mitochondria, ribosomes, dictyosomes. Chaliye. Come on, everybody, and especially for girls. I'm sorry, boys, but there's a very special message only for girls who are appearing for NEET 2021 coming after the class. Only for girls, very, very special message will come after the class. Come on, the most abundant protein of the biosphere is found in chloroplast, mitochondria, ribosome, dictyosome. Well done. Most abundant protein, Rubisco, chloroplast. Guys, this is simple question, Rubisco. Instagram में मैं message देख लेती हूँ बेटा. After the class, आज शाम को I will be there on Instagram. I will be there on Telegram. I will be there in the comment section for next 2 days. I promise you this. I promise you this. The algal cell wall is made up of cellulose, algin, pectin, polysulfate esters. Most of the gymnosperms are homosporous. Most of the pteridophytes are heterosporous. Some are homosporous. Water is not required for fertilization in seed plants like Selaginella salvinia. Correct. Nice, tricky question. Correct. The algal cell wall is made up of cellulose, algin, pectin, polysulfate esters. Gymnosperms are heterosporous. Well done. Question number 20. Already 20 questions down. Well done. Among the following, more than one trophic level in the food chain can be occupied by? बेटा लर्न करेक्ट को इनकरेक्ट नहीं पढ़ना, अभी भी टाइम है. करेक्ट को इनकरेक्ट नहीं पढ़ना, इनकरेक्ट को करेक्ट नहीं पढ़ना. फिश एंड zooplankton, sparrow and insectivorous plants, frog and lion, grasses and lichens. Sparrow and insectivorous plants. Zooplanktons will always be dependent on zygoplanktons. Producer नहीं हो सकते. Sparrow grain भी खा सकती है. Sparrow जो है आपका पहले भी खाया हुआ, आपके insect को भी खा सकती है. ठीक है, चलिए चलिए. हाँ जी, डेवलपमेंट ले चलिए बेटा, ले जाइए बेटा. The technique of direct introduction of gametes. Direct introduction of gametes. चलिए. हेलो. थोड़ा सा आगे लेफ्ट हैंड साइड उस मेस की गार्ड को दे दीजिए. एसबीआई के आगे थोड़ा सा आगे लेफ्ट हैंड साइड. गिव gamete intrafallopian transfer. नेक्स्ट क्वेश्चन. एसबीआई के थोड़ा सा आगे लेफ्ट हैंड साइड. एसबीआई के लेफ्ट थोड़ा सा आगे ले जाइए.
नॉइज पोल्यूशन में क्या सिक्रीट होगा? क्या सिक्रीट होगा? एलिंगी, एड्रीनलिन, हाइपरटेंशन कॉज करता है। चलिए 23rd क्वेश्चन, चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। एसबीआई के आगे जाके एक गार्ड की जगह होगी, इसमें तल्ला मैसेज है। नहाते दीजिए। सब नाम दे दीजिए। मेरे पूरे खानदान में एक आदमी के पास जोमैटो है, वो हूं मैं। और जब जिसको भूख लगती है वो सिर्फ मुझे फोन करता है और सबके फोन मुझे आते हैं। फिर सारे जोमैटो वालों को मैं समझाती हूं, भाई मैं इस जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा ना, मैं सबके फोन में जोमैटो डाउनलोड करवाऊंगी पूरे। मतलब मेरे को लगता है कोई भाई मेरे एक्सटेंडेड खानदान में भी सिर्फ शायद मेरे फोन में ही जोमैटो। फिर मुझे फोन आता है, वानी ऑर्डर कर दे, फिर मैं ऑर्डर करती हूँ। मेरे जोमैटो में तो 500 एड्रेस है। जोमैटो वाले सोचते होंगे इतनी भूखड़, आज यहाँ बैठ के खाना खाती है, कल चेन्नई चली जाती, परसों दिल्ली, फिर दिल्ली से चली जाती गुवाहाटी खाना खाने, फिर गुवाहाटी से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से रुड़की, फिर चंडीगढ़ पहुंच के खाना खा रही है। खाना ही खाती रहती है ये 24 घंटे। आप यहाँ आके ये डिलीवर कर दीजिए, वहां आके वो डिलीवर कर दीजिए, यहाँ आके ये डिलीवर कर दीजिए। भाई डिलीवरी पैन बन गई हूं मैं, सच बता रही हूँ। रोज मेरा काम एक ही है, ठीक है? आप लोग भी अपना एड्रेस दे दीजिए। जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा, आपके घर में मिठाई की जिम्मेदारी मेरी, पक्का प्रॉमिस। पढ़िए पर अभी विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आप सोचते हो रोज इनके घर में जोमैटो के फोन आते हैं। स्पोक्स पर्सन बन चुकी हूं मैं। पैन इंडिया आपको कहीं भी डिलीवरी करानी है, मैं हूं। फॉल्स रिगार्डिंग द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। राइट एवरीवन, ट्रेकिया ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स मैंने कराया, सपोर्टेड बाय कंप्लीट। गलत है, इनकम्प्लीट। फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस डिक्रीज करता है। एक तो कंप्लीट था, एक था इंक्रीज फ्रिक्शन, डिक्रीज फ्रिक्शन करेगा। चलो चुनो मुनो 25th क्वेश्चन। यस, बिहाइंड द सीन बहुत अच्छा बन सकता है बेटा। Over 1/3 of all named species on Earth are arthropods. All mollusks contain a fine-like grasping organ. Nereis possess parapodia which help in swimming. Development is indirect in both form. Following statements ABCD चलिए। एक्सीलेंट क्वेश्चन। पता ही नहीं हमें करेक्ट इनकरेक्ट क्या करना है ना यार? ये तो ना खुशी अनिसोर आज आगे लीडर बोर्ड पे नंबर 2 साथ था सोनम, दीक्षा, यशस्वी, बुद्धा, धारणी, राफिया, टीएच। चलो 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 चलो। हाँ आई वो लिखा नहीं था कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। 26 चलिए। Symbiotic association with roots. Can we move ahead quickly? It's an easy one. Glomus as Rhizobium azospirilla, more than one option is correct. चलिए। Tomorrow, yesterday also we've done it. Tomorrow कह रही हूँ मैं, right? Rhizobium also. Both A and B. Rhizobium also. Question number 27. The purpose served by keeping beehives is weeds yield, honey yield, crop yield, both A and B. A and B, D option, very good. D option, D, delta, D.
D. 28th. Sutures are made up of dense fibrous connective tissue जैसे आपके स्कल में होते हैं. 29th. अगला सवाल निशा जी चलिए. हाँ दीजिए. नहीं कुछ नहीं है. हाँ जी. एस शेप्ड कर्व, स्केमॉन्स ग्रोथ कर्व. चलिए 30th. दे दीजिए थोड़ा जल्दी में. अरे आप फिर आवाज मार दो ना. कोई आप कौन से वाले गेट पे हो? गार्ड खड़ी हुई है वहां. हाँ वो वाले जाइए. Risha, it's called archegonium. How can you say antheridium as female reproductive system, बच्चों? 31. Starving plant is provided with glucose. Rate of respiration increase, decrease, constant, first rise, then fall. हो गया? Increase. So it's going to definitely first rise, then fall. No rate of respiration will be affected. Starving plant, it has no glucose, it has nothing. You will give it glucose, the rate of respiration will increase. तो मुझे 3 relatives के actually ना मेरे grandparents वगैरह बहुत old हैं, कई cousins, तो उनको खाना भिजवाना था, भिजवा दिया. 3 कोरियर करने थे, तीनों हो गए. अब तुम पढ़ाई करो. चलो 32. ठीक है? चलो. Select the one of the most important functions of botanical gardens. One can observe tropical plants, ex-situ conservation, provide natural habitat for wildlife. Botanical gardens. What is the answer going to be? ABCD. Now please increase your speed. B. Ex-situ conservation. 33rd. Chaliye. Which statement is correct about the disorder of skeletal muscular system? Correct. Please don't read it as incorrect. Muscular dystrophy, age-related. Osteoporosis, decrease in bone mass, high chance of fracture with advancing age. Muscular or skeletal. Myasthenia gravis, autoimmune, sliding of myosin filaments or acetylcholinesterase. Gout, calcium or uric acid. Answer is absolutely right. B. Vachununu, you're the best in the country. 34th. Well done. Next question. Given below is a schematic representation of the mechanism of hormone action. Select the hormones which bind with Y. Intracellular receptors. X is extracellular. So this is such a nice question. We've done this before, but I've just asked you in the form of a diagram. So these are going to be the cytoplasmic one. So obviously it is going to be testosterone and estrogen because these are the 2 steroid hormones. Well done. Same question which you've done yesterday also, but there's a different way of asking the same question. Well done. Next question. Arrange the following structures based on their location from the periphery to the center with respect to the anatomy of dicot root. 1, 2, 3, 4. Chalo.
Well done. So answer will obviously be, it's a simple question, but आप इसको प्लीज याद रखिए. सबसे पहले आएगा एपिब्लेमा, which is the root hair. ये तो आपको पता होना चाहिए था, किसी में भी नहीं है. मुझे लगा आप ये तो देख लोगे. एपिब्लेमा आज भी याद रख लो, it is the root hair. फिर उसके बाद आपका क्या आता है बेटा? Casparian strip, फिर आएगा pericycle और फिर आएगा conjunctive tissue, which is the inside part. Well done. Yes, well done. Happy Ganesh Chaturthi, Akash and everybody else. God bless all of you tomorrow. Day after tomorrow, in fact. चलिए, Can you answer? A, blood नहीं है बेटा, मैं पढ़ देती हूँ. Generative cell flows in the cytoplasm of the vegetative cell. Spore pollen is absent in germ pores. Pollen range measure out 25 to 50 मैंने पहले कराया हुआ है. Well done. Well done. Next question on your screens, please. Question number 37th. The hormone responsible for maintaining the diurnal rhythm and sexual behavior in animals is melatonin, androgens, and aldosterone, FSH. Diurnal rhythm, circadian rhythm, sleep-wake cycle. What is the hormone? It has to be. Vilas ने आंसर कर दिया है, सबने आंसर कर दिया. It has to be melatonin. Melatonin. Next question. 38th question. Melatonin. Well done. So we come to the 30th question. In the 1950s, kynetin was first discovered by. We've done this question also before. It's an NCERT line. Skoog, Miller, Letham, Kelvin, Thiman and Wendt. What is the answer to this particular question? आज मेरा बर्थडे नहीं है टूअर जी, आप सबको पता है इसका आंसर Skoog and Miller. So I want to go to the next question. That is question number 39 on your screens. Please make sure that you're liking, make sure that you're sharing, make sure that you're subscribing. The definition of biotechnology: the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogs for products and services. GEAC, European Federation of Biotechnology, US Patent and Trademark Office, International Union. मुझे पता आप A और B में कंफ्यूज हो गए, मेरे को वही देखना है कि डेफिनेशन किसने दी है. बताइए, चलिए बिना कंफ्यूज होइए. चलिए, यस दीपक जी बिल्कुल बढ़िया. चलिए बच्चों आंसर कीजिए प्लीज, जल्दी से जल्दी. ABCD क्या आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, आपको पता होना चाहिए. वेल डन. यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, GEAC ने नहीं दिया. GEAC ने ये बताया कि कुछ भी नया करने से पहले हमें बता दो, वो GEAC ने दिया है. राइट. 40th क्वेश्चन. वेल डन. हाफ वे मार्क पे लगभग पहुंच चुके चुनू मुनू बच्चों. चलिए, इन बैक्टीरिया द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन बाय चॉपिंग फॉरेन DNA इनटू पीसेस. But it does not cut its own DNA because it is methylated. कल के क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन था, restriction and methylation. It is methylation. Self DNA को methylation कर लेता है. Is that clear, Sai Lakshmi and everybody else? 41 question. चलिए, कल सुबह 6 बजे रखोगे, 7 बजे रखोगे? 7 o'clock suit you better. थोड़ा आराम से उठ के पढ़ लेंगे. 7 o'clock, which is the following option correctly defines the function of sodium potassium pump. Sodium potassium out of the neurons, sodium and potassium into potassium out, potassium into sodium out. As soon as it is on. Right, 7 o'clock थोड़ा बेटर रहेगा. 7 to 8:30 पढ़ लेंगे. White sodium potassium pump 3 sodium out 2 potassium in. सोडियम पोटेशियम ATPase की बात कर रहा है. सोडियम पोटेशियम ATPase की बात कर रहा है. चलो बताओ 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 बेटा. पोटेशियम into the neuron and sodium out. 3 sodium out 2 potassium in. ये तो आप एक्शन पोटेंशियल पे आ गए. कल ऐसी गलती मत करना. ये तो आप एक्शन पोटेंशियल पे आ गए. सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहा है. सोडियम आउट 3 पोटेशियम 2, इसीलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन बन जाता है -70 मिलीवोल्ट. फिर जैसे ही आप ओपन करते हो, राइट, जैसे आप चैनल को ओपन करते हो, सोडियम रशेस इनसाइड. चलिए, डन एवरीबॉडी. चलिए, in a certain plant, yellow fruit color is dominant to green fruit color. Round one is dominant to oval. 2 genes are located on different chromosome. Identify the outcome of this particular cross. Is back cross with double recessive. Test cross का क्या होता है रेशो? 1:1 in monohybrid. ये dihybrid का रेशो क्या होगा? फिनोटाइप का होगा कि जीनोटाइप सबका होगा? चलो बताओ. यहाँ पे 1:1 के 2 आ रहे हैं. फिनोटाइप होगा कि जीनोटाइप होगा? Beta, both phenotype and genotype. Yes? Sure. 43.
In marigold, the type of placentation is called marigold basal free central axile. Well done. सबको पता है, सबको पता है. चलो. दीपड़ू कह रहा हमें बुला दिया. दीपड़ू परसों से 2022 के पीछे पढ़ने वाली हूँ. चैन नहीं है 2022 को. ये नहीं आके बोलना कि हाँ ऑल द बेस्ट 2021. Total number of ATP formed in the aerobic respiration from one glucose molecule 24, 40, 30 and 30. चलो. बहुत अच्छे राइजिंग शैडो. कल आपके 600 नंबर पार होंगे, देख लेना. सबको पता है बी 38. चलो फिर अगले सवाल. वेल डन. 45th. Which of the following organisms was used to establish the semi-conservative nature of DNA? Experiments पे तो मैं कल unequivocal proof इतनी बार experiments करवा चुकी हूँ. चलो. Escherichia coli, Neurospora crassa. Well done. Pneumococcus, Drosophila melanogaster. What is the answer? I'm so happy. E. coli. Well done. 46th. Key concept of Darwin's theory of evolution is natural selection, branching descent, saltation, both A and B. अरे वाह. Natural selection, branching descent, both of them. 47th. Acid of xylem sap caused due to transpiration depends mainly on three physical properties of water. The properties result in low tensile strength but high capillarity, low tensile strength as well as low capillarity, high tensile strength as well as high capillarity, high tensile strength but low capillarity. High tensile strength as well as high capillarity. 48th. A B C D. B identify करो, आंसर आ जाएगा. What is B? Easy peasy lemon squeezy. It's very simple. Just go identify B. You will get your answer. Well done. Well done. 49th. During biological nitrogen fixation, nitrogen is converted into. And guys, don't worry about the test discussion. मैं 5:30 तक start कर दूंगी. इस बार तो मैंने PCB रखा है, और एक बार केमिस्ट्री बायो हो जाए, केमिस्ट्री फिजिक्स हो जाए, मैं बायो दोबारा भी करवा दूंगी. बिकॉज बहुत बच्चे होते हैं जो उसी टाइम मोबाइल फोन पे आ जाते हैं जैसे ही वो घर पेपर दे के निकलते हैं. So I will redo it at 7 PM. Nitrogen is converted into ammonia. That's the first one. leaderboard आ रहा है बेटा. leaderboard पे अभी But tension, no Khushi, Anisul, Satata, Sonam, Diksha, Buddha, Rafia, Kunal, Simu, you can, and I'm 100% sure you will. Future doctor. Chaliye. 50th. So, amniocentesis is often misused. ये मत पढ़िए. Amniocentesis is being used to determine the sex of the fetus so that the female fetus could be aborted. 1 and 2. What is the answer? There we go.
Definitely both 1 and 2 are correct. Well done. Next question. Question number 51. And I'm supremely proud of you guys. Whatever is the outcome, remember I will be with you. Whatever is the outcome, I'll be there with you. Come what may. Kind of evolution which is seen between flying insects, birds and bats. Divergent, parallel, retrogressive, convergent. Flying insect, bird. Divergent, convergent, 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 convergent. 52. Structures that are interconnected by corpus callosum. Are they the two cerebral hemispheres? Are they the two cerebellar, cerebral? देखना जल्दबाजी करोगे. Cerebral hemispheres. Fifty-third. The phenomenon of development of organisms without fertilization of ovum. Easy. Parthenocarpy, parthenogenesis, confusion यहीं start होगा और यहीं पे खत्म होगा. आज last time कर लो. चलिए. Janu, I can see your messages coming. Don't worry. Nobody has to worry. Have faith. Your faith has to be stronger than your fear. Parthenogenesis, parthenocarpy without fertilization of ovum. Let me see how well you're performing. Yes, everybody. Parthenogenesis. And trust me, when your faith is stronger than your fear, you're just sitting on the cusp of great miracles happening. You've given your 100%. You've given your 500%. There's nothing else that you could have done. Just wait. God has plans for you. Your hard work is just about to get rewarded. Right? Your hard work is going to get rewarded. The world will know how hard you've been working. Right? Have faith. If you worked hard, aaj tak in my entire life, I have never come across anybody who's worked hard but not got the results of hard work. Yes, everybody you reap what you sow. So if you've sown hard work, if you've sown persistence, if you've sown dedication towards your studies, you are going to reap the benefits now. Right? You will reap the benefits of your hard work. Trust me. Asexual reproduction takes place by zoospores or by aplanospores in. अगला सवाल 52 55 The Hershey and Chase experiments using bacteriophage demonstrate. चलो बेटा प्रीतू You two will have a big bachchi party tomorrow at your place. Day after tomorrow. I mean, मुझे लग रहा है कल है. I'm getting very anxious. Don't worry, don't get anxious. Right? चलिए. DNA is genetic material. Come on, kids. Let's do this. B and T cells responsible for acquired immunity in the body are formed in thymus, bone marrow, thymus and the bone marrow respectively, lymph node and the bone marrow respectively. Chalo. You will do well. I know you will miss me a lot, but don't worry. You're not going anywhere. कुछ होंगे आप में से नॉटी बच्चे जो सिर्फ यहाँ पर अपने काम के लिए आए हैं, जो अगले दिन unsubscribe कर लेंगे. But so many of you will be like my last year students जो Biotonic family के members बन चुके हैं. बोल मारो both of them. Maturation नहीं पूछा, form पूछा है. And they're not going to go anywhere. They're going to become a part of our channel. Right? Naughty and cute Biotonians.
Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. The changes in the ovarian uterus are induced by changes in the levels of the ovarian hormone. LH surge induces ovulation. If fertilization occurs, corpus luteum degenerates immediately. Fertilization के बाद corpus luteum degenerate करेगा या बना रहेगा? 1 and 3. Well done. Well done. Fourth was wrong. चलिए. 58. Statins, Monascus, Purpurus, Propionobacterium, Shermani, Swiss cheese, Trichoderma polysporum, Cyclosporin, Biogas, Methanoبacteria. ये स्पीड से करना है एग्जाम में, हो जाएगा ना? इतनी बार कराया है ये क्वेश्चन तो बेटा. Yes, my dear, it's more than enough. And there's going to be a very special message only for girls. So please, please don't miss the class. I mean, like, don't miss. Which of the following first proposed the natural system of classification? Takhtajan, Hutchinson first, Engler-Prantl, or was it Bentham and Hooker? Bentham and Hooker! वाह चुनू the best. लग तो रहा है मेहनत की है, मेहनत दिख रही है ना? चलिए. Phenomenon of induction of flowering upon low temperature is called as vernalization, right? A option कर लिया सबने आंसर. चलिए. 61. The exchange of chromosomal segment between non-sister chromatids is seen during non-sister leptotene, pachytene, diplotin dikinases. Pachytene. Pachytene. पॉलिनेशन कहाँ होता है? Angiogymno, cannot be anything else. (63) Wow, kids. The universe will bless you and protect you. Don't worry. If you worked hard, nothing will come in between you and your success. According to most accepted theory of the origin of universe, the origin of the universe is $20 billion years ago. Well done! Polar tube enters the ovule through antipodal, micropyle, degenerating synergies, any of these. Polar tube enters the ovule through micropyle, antipodals, degenerating synergies.
Micropyle. Well done. 65th. नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में आप चीट शीट याद कीजिए इस चैप्टर की, बस एक बार देख लो चीट शीट। एंड anal styles in male. Well done. 66th. I think by 9:30. What time are you planning to sleep today? Have you had your dinner? Please, early dinner. At least tomorrow, early dinner. What time are you planning to sleep today? Synthesis of non-essential amino acids like glutamic, aspartic takes place during. Please, right? 1 a.m. Don't do that. Don't do that. Tomorrow, full day, you'll be tired. No, never, never. Please, 10:30 maximum you should be sleeping at least 2 days before your exam. Anabol is when you break down the complex material. Note 12 and all guys, please, it is my request. इतना basic आपको नहीं पता क्या? कि क्या कह रहे हो 12 बजे 1 बजे 11 बजे तक सो जाओ 100%। मैं 9 9:30 क्लास खत्म करूंगी, खाना नहीं खाया, थोड़ा सा खाना खाओ, थोड़ी देर टीवी देखो, आज रिलैक्स करो। 1 बजे तक नहीं करना बेटा, बिल्कुल भी नहीं। 10 साढ़े 10 11 बजे आप आराम से सो जाओ। ऑल नाइट तो जिसने कर लिया आज ना, वो तो अपना पेपर खराब करेगा, मैं ऐसे बताऊं। बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। Cannot be explained by the law of dominance। बिल्कुल भी नहीं करना नाइट आउट वाइट आउट, ठीक है? नो बेटा, रिवाइज से कुछ नहीं होगा, एग्जाम में याद आ जाएगा बेटा। वैसे भी एक दिन में कुछ रिवाइज नहीं होगा अभी, जो जितना पढ़ा एग्जाम में सब याद आ जाएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं कर सकते, को डोमिनेंस नहीं कर सकते। चलिए, हाउ मेनी ATP and NADPH are required for the fixation of 5 molecules of CO2 in the C3 cycle? कोई अच्छा सा कपिल शर्मा का शो देख लो 10 मिनट आज, ठीक है? एंड देन गो ऑफ टू स्लीप। (18 and 12). It's a mistake by Menti. 18 and 12. चलिए, which characteristic is not possessed by the phylum Annelida? Not closed circulatory system segmentation, pseudocoelom, ventral nerve cord. Not possessed. Well done. They do not have a pseudocoelom. They do have a closed. Yes, beta. Tomorrow also I will teach you. Tomorrow we'll meet at 7 o'clock in the morning. Which characteristic is not? अच्छा, ये तो same question आ गया। अगला सवाल। Right? You must watch some nice comedy। 5-10 मिनट देखो, खाना खाओ आराम से मॉम डैड के साथ बैठ के, और आज सो जाओ टाइम पे, ठीक है? कल तो 100% 9 o'clock आपको सोना चाहिए, 100% कल। आज भी स्लीप ऑन टाइम। एग्जाम से 2-3 दिन पहले नाइट आउट वगैरह नहीं मारते बेटा। ए भी क्या है? फंगस और एंजियोस्पर्म्स। ए और बी क्या है? फंगस एंड एंजियोस्पर्म्स। वेल डन। अगला सवाल,
कर लिया आप लोगों ने मेहनत। अश्वगंधा एंड पिटूनिया किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? उसी फैमिली को जिसमें बैंगन भी लगते हैं। अब बताओ, वही फैमिली है जहां बैंगन भी होते हैं। क्या होगा आंसर? एग्जैक्टली वही फैमिली जो बैंगन की फैमिली है। मतलब सोलानेसी हिंट देके भी नहीं सुने ये लोग। अगला सवाल, चलिए 74, 20 more questions to go। ठीक है जैसर जी, 100 क्वेश्चंस कराते हैं। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, डोंट वरी। विद रिस्पेक्ट टू चार ग्राफ्स रूल, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज करेक्ट बेस कोडिंग। एटीजीसी, एसीजीटी, एजीसीटी, एडिटिंग, थाइमिंग, बोन इन साइटोसिन। वेल डन। अगला सवाल, सोनू, खुशी, अनिसुर, सात्वता, दीक्षा, राफिया, कुणाल, बुदा, फ्यूचर डॉक्टर रफी एंड कोमल जमरा। वेल डन, वेरी वेल डन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 75 ऑफ 95। चलिए, the last level of chromosomal organization is, and guys please don't forget, मैं सारी state wise cut off इस साल की बना दूंगी। that's why I'm taking 13th को शाम को 7 बजे क्लास। पूरा दिन बैठ के क्या कट ऑफ जाएगी, कितना वेटेज जाएगा पीसीबी का, स्टेट के टॉप कॉलेजेस, बेस्ट कॉलेजेस क्या है, पूरी कट ऑफ आपको मिल जाएगी। लास्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन क्या है बताइए? लास्ट लेवल न्यूक्लियोसोम। अगला सवाल, Arrange the following terms in the correct developmental sequence: pollen grain, sporogenous tissue, microspore tetrad, pollen mother cell and male gamete। चलिए इजी है। स्पोरोजिनस टिश्यू, पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर, फिर टेट्राड बनेगा, पोलन ग्रेन, मेल गैमेट। वेल डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। Incorrect for gymnosperms. Incorrect for gymnosperms. They're asking you incorrect. Oh my God. लीव सिंपल और कंपाउंड हो सकते हैं, क्यूटिकल थिक होगा, संकन स्टोमेटा होगा, मिडल लीव्स होते हैं सरफेस एरिया कम करने के लिए, साइकस के पिन्नेट नहीं होते हैं, बाई पिन्नेट होते हैं। चलिए सेवेंटी। ग्राउंड सब्सटेंस जो कनेक्ट हुआ है क्या कहलाता है बताओ? Thank God. Glycosaminoglycans is a polysaccharide. It's a polysaccharide. Glycosaminoglycans. Next one. $79.
एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बायोलिस्टिक माइक्रो इंजेक्शन क्या करेगा बताइए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बायोलिस्टिक जीन गन क्या करेंगे DNA coated substance gene amplification PCR antigen antibody reaction ELISA well done 80th not a correct dominant recessive trait of Pisum sativa. Yellow green pod color round wrinkle seed shape full constricted ठीक है 81 come on बिल्कुल 2 बार पेपर करना है 2 बार पूरा पेपर देखना है मैं कल सुबह इसके बारे में बात करूंगी एग्जाम हॉल में जाकर क्या करना है एक्रोमियन प्रोसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द पेल्विक गर्डन पेक्टोरल गर्डन कार्पल टार्सल चलिए चलिए आई एम राइट अच्छा सॉरी आई हेट थिंग्स आई वाज मेरे मन में कुछ आया जो आपको बताना है तो आई एम राइटिंग दैट डाउन पेक्टोरल गर्डल सेकेंड लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इज लिविंग डेड नहीं पूछा है column thymus is dead complex में xylem fibers are dead third O group mother with O group child abuses AB group man for fathership of child IO AB हो सकता है mother is true but father's claim is wrong well done चलिए आज आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो you guys are doing fantabulously well which of the following cells is usually dead and without a protoplasm चशनप्रीत हेयर स्टाइल कुछ नहीं 2 चोटियां बनाओ गुत्ते करो और जाओ ਹੁਣ हेयर स्टाइल की दसना जसप्रीत ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹੋਣੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਗੁੱਤ ਕਰ ਲਓ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਈਲ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਿਓ स्क्लेरेन्काइमा राइट चलिए जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो भाई अब हेयर स्टाइल क्या करो पफ करके थोड़ी ना जाओगे इधर ऐसे ऐसे करके मेरे तो कुछ बाल ही नहीं है मैंने तो जिंदगी में कभी स्टाइल ही नहीं किया बालों का उसके लिए बाल होने भी चाहिए थोड़े लंबे काले घुंघराले बाल राइट बट एनीवेज बेटा जितना सिंपल बन के जाओ चलो A structure of a neuron is given in the diagram below. Select the incorrect statement with reference to the same. Just fast. चलिए. Now eat your dinner. By 10 p.m. today and tomorrow you should be fast asleep. Get up morning में get up at 6 o'clock. बिल्कुल
clips allowed है tension not. B represents the granular structure. Very nice. There is no structure only. I don't know how the kids answered. Right? उन देखो कई लोग की मैं देख दी है आजकल ते आधे बाल खुले छोड़ दे हंदे ने. Okay, now my Punjabi is like terrible. But what I'm trying to say is, I've seen some people यहाँ they do a bun here, मुझे समझ में नहीं आता उसका मतलब. So if I have to show you something, it's very absurd, it's very funny. I can understand some people have really nice hair, they can do it. I have like horrible hair. So they have a round here and the hair is open. Right? Don't do such things and tell me, can we do such things in the exam? I've seen people do it. It's very nice if you're going out for a walk, you're going to a park, you're going to eat food. Don't wear 10 clips now. इधर पूरे clip लगाए हुए हैं, इधर clip. Just 2 clips से ये बांधा, go. As simple as possible, right? Please. Don't wear anything funky, don't wear anything jazzy, wear simple clothes and just go for the examination. When pollen grains of a flower pollinate the stigma of another flower of the same plant, which is called as another flower of the same plant, heterogamy. Another flower of the same plant, heterogamy. 87. 9 o'clock, go have your dinner. 10 o'clock, you must sleep off today. Please ask your question instead of typing, I have a question. Strength of linkage between genes Y and W. 3 times I've done this question. Alingon is silky long hair. तो Alingon परसों जाके अपने बाल कटा के आया. Alingon चोटी करता था. Alingon 2 चोटियां कर सकता था. Alingon के इतने सिल्की लंबे बाल थे. परसों गया बेचारा बड़ी मुश्किल से रोता. Right? Y and W is higher than that of genes W and M. Y and W is closer. Right? 88. Chali. Come on, mascots. Which of the following vitamins is present in the protein found in rods? And guys, please make sure that you're liking, sharing, subscribing, coming back for the discussion. I will, on 13th, I will do the cutoff prediction. So that you can look at it, you can see your cutoffs, which A, which B, which C, which D. In rods and cones, A obviously. Right, retinal, well done. 89. With reference to Cohen and Boyer. Don't wear some 20 clips and go, okay? But yeah, 10 clips. लगाओगे तो एग्जामिनर भी बोलेगा कि क्या चल रहा है. 2 क्लिप लगा सकते हैं आप. पृथ्वीराज बहुत हंस रहा है. पृथ्वीराज के तो कमर तक बाल थे. पृथ्वीराज had hair till here. Silky straight hair पृथ्वीराज had. Alingon ने कटाया तो डर के मारे पृथ्वीराज ने भी कटा लिए. Cohen and Boyer were the scientists who introduced recombinant DNA in 1975. मेंटी आपके जाने के दुख में बहुत सेंटी हो रही है. Right, just smile. I know some of you are smiling. Smile. It's a great stress reliever. The higher the stress, the lower your mental faculties work. Exam में याद तब आएगा जब दिमाग काम करेगा. Last में एक दिन पढ़ के किसी का फायदा नहीं हुआ है. Is that clear? है बात. एग्जाम से बाहर आते ही सब कुछ याद आ जाता है. Right? Yes, ma'am. जैसे एग्जाम से बाहर आते हैं, because it is over, because you're outside the stressful situation. The moment you step out of the house, you will remember everything. The moment you step out of the exam hall, you will tend to remember. You will understand what mistakes you are doing. Please don't take stress. I'm telling you, I'm urging you, watch a comedy show for 5-10 minutes, eat your food on time, go for a walk, sit and talk to your parents for some time, close your books, don't talk to any of your friends. वो video देख लीजिए कि last में क्या करना है, and sleep off on time. Tomorrow morning, get up at 5:30, 6 o'clock, revise physics, eat the frog. 7 o'clock, come for the biotonic class here, sharp at 7 o'clock. Is that clear? चलिए. And उसके बाद सारे दिन में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज देखते रहना. 1-1.5 घंटे से ज्यादा की कोई क्लास लगानी नहीं. कोई मैराथन काम नहीं आएगा. अभी लास्ट में कोई मैराथन नहीं, कुछ नहीं. अपने आप पढ़ो. फोर एंड 3 राइट. बायो में जो नोट्स बनाए, जो भी बनाए, पढ़ते रहो थोड़ा सा. How many of the following features belong to skeletal muscle? Striped, voluntary, not under the control of central nervous system, primary, involved in locomotory action.
चलो, किसी की बात में मत आओ, पेपर ऐसा हो गया वैसा हो गया, किसी की बात नहीं, कोई बात नहीं करनी किसी फ्रेंड से, सिर्फ अपना आराम से बैठना है और अपना रिवाइज करने नोट्स वगैरह, ठीक है? वेल डन, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, एक बच्चा आ गया अभी, यदुवंशी, कुछ भी लिख रहा है, ठीक है? Which of the following secondary metabolites are wrongly matched? कोई किसी की बातों में नहीं आना, फिजिक्स टफ है, फिजिक्स इजी है, इसलिए बात ही नहीं करनी। Which of the following secondary metabolites are wrongly matched? Toxin, drug, curcumin, alkaloid, codeine, lectin, heparin. और किसी को समझाना भी नहीं, कोई कहता है पेपर ऐसा हो गया, बोल दो हाँ, बात ही नहीं करनी किसी से हमने। डन? डी, किसी से कोई बात नहीं करनी, ओके? Well done, well done, well done. Only the last one. Well done. 93. Which of the following amino acids has hydrogen in its R group? Alanine, serine, glycine, cysteine. Hydrogen. चलो, eat your dinner at 9 o'clock. समझ आ रहा है? Eat your dinner at 9 o'clock. Just eat your dinner at 9 o'clock. Glycine. And after the class, just go after you eat your dinner, and then you must quickly rest. Ninety-fourth. Just rest now. And guys, पेपर भले मार्क्स के बच्चों के सिलेबस का आ जाए, आप अच्छा करोगे, मुझे पूरा फेथ है आप पे। बेटा 11th का लेक्चर बेटा मंडे से शुरू हो जाएगा बेटा। क्लोजली लोकेटेड जीन्स आर ऑलवेज असॉर्ट, नहीं, क्लोजली लोकेटेड तो लिंकेज करती हैं, दे डोंट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। और कल सिर्फ अपना बैठकर सेल्फ स्टडी करना, सेल्फ रिविजन करना, स्ट्रेस मत लेना। सुबह 7 o'clock की क्लास लगा दो, फिर मैं 7 o'clock की पक्का हो जाएगा 7 o'clock तक। नॉट रिलेटेड टू कॉकरोच, चलो नॉट, चलो चलिए। Not related to cockroach. 3 pairs of jointed legs are present on abdomen. Yes, 2. 1 is above it. Well done, guys. Sonam, Khushi, Satvata, Anisur, Rif, Buddha, Rafia, Sumedha, Sadan, Anugraha. Well done. I think we should stop the class here. You should not study late night. 10 साढ़े 10 तक आज बिल्कुल नहीं पढ़ना है. Sonam, very, very well done. I am very happy with your attendance. I am very, very happy with your performance. Tomorrow morning 7, 5:30, 6 o'clock उठ जाना. उठकर एक बार अपना फिजिक्स पढ़ लेना. शार्प एट 7 o'clock मिलेंगे, ठीक है? प्लीज मेरी बात मानो, मैं 11 साल से पढ़ा रही हूँ. फटाफट खाना खा लो, जल्दी से रेस्ट कर लो और 11 बजे तक सो जाओ. अभी थोड़ा सा केमिस्ट्री कुछ रिवाइज कर लो. डन, फटाफट से. कोई लाइव लेक्चर नहीं देखना, भी कुछ नहीं. बायो कर लिया आपने, ठीक है? फटाफट जाओ, खाना खा के चलते फिरते थोड़ा सा कुछ जो नोट्स बनाए हैं वो थोड़े से रिवाइज करो. समझ आ गया? ठीक है? कल सुबह 7 o'clock कर दीजिए. 6 बजे हो सकता है जल्दी है, 7 o'clock आ जाओ. कल 5 बजे तो लास्ट होगा आपका डिजिटल कॉन्टैक्ट, ठीक है? बहुत बहुत blessings. God will bless you, God will protect you, and Biotonians, you will do the exam very well. So lots and lots of love and blessings, lots of आशीर्वाद, lots of प्यार. बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में, बहुत बहुत अच्छा करोगे, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लेना. आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, आई एम अवेलेबल ऑन द चैट सेक्शन. बहुत ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ऑलवेज विद यू. बिल्कुल टेंशन मत लो. Take care. Bye bye. See you sharp at 7 o'clock tomorrow morning.
God bless you. God bless. Bye bye. Bye.